In this video, I would like to share you the changes which has been made in the provisions of TDS TCS in the budget 2023-24. The only change which has been made in the TCS for the foreign remittance of overseas tour packages. Now, Section 206 of the Act, it provides for TCS on business of trading in alcohol, liquor, forest produce, scrap, etc. Subsection 1G of the Section 206, it provides the TCS of foreign remittance through the liberalized remittation scheme on the sales of overseas tour packages. Now, अब subsection 1G of Section 206 में amendment की गई है in regard to the overseas tour. The only change has been made in regard to the overseas tour packages and the rate of TCS 5% से बढ़कर without any threshold limit 20% हो गया है without any threshold limit. Apart from the overseas tour packages, in any other cases, जैसे कि जो इन्वेस्टर्स इंटरनेशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में या फॉरेन स्टॉक मार्केट में, उनके लिए भी TCS का रेट 5% से इंक्रीज होके 20% कर दिया गया है. एंड दिस अमेंडमेंट विल टेक इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2023. The next change has been made in the section 194N of the TDS. It is with the banking company or the cooperative society who at the time of payment of any amount to any individual in excess of 1 crore rupees, उन पे वो 2% का TDS काटता है. But in case of non-filer of return, जिन्होंने last 3 assessment year immediately preceding the financial year in which they received the payment, उनके लिए ये TDS की रेट 2% in excess of 20 lakh but not exceeding 1 crore rupees, and it is 5% if it exceeds 1 crore rupees. Now, the amendment has made in this section 194N by inserting a new provision which provides that only in case of cooperative society, the word 1 crore has been substituted by 3 crore, and this amendment will take effect from 1 April 2023. Section 197 is proposed to be amended to include Section 194 LBA in its scope. Now, Section 196 of the Act relates to grant of certificate of tax deduction at a lower or nil rate. It provides that the SSE is required to apply to the assessing officer for TDS at a 0 rate or the lower rate, and if the tax is required to be deducted under the section 192, 93, 94, 194 and others. If the assessing officer in this regard, अगर वो satisfy हो जाता है कि उसका TDS lower rate या 0 rate पे कटना चाहिए, तो वह उसे एक सर्टिफिकेट ग्रांट कर देता है और उस सर्टिफिकेट के आधार पे he can claim his TDS to be deducted at lower rate. Now, Section 194 LBA basically deals with the non-resident who have a interest income in regard to the units of the business trust. जब भी ये इंटरेस्ट इनकम ये बिजनेस ट्रस्ट नॉन रेसिडेंट को प्रोवाइड करते हैं तो वह उन पे TDS 5% का TDS काट लेते हैं. वैसे देखा जाए तो ये इंटरेस्ट इनकम सेक्शन 1023 FE में एग्जाम्प्ट होनी चाहिए, लेकिन this section 194 LBA does not come under the provision of the section 197. इसलिए इन नॉन रेसिडेंट को ना तो लोअर टैक्स डिडक्शन अब अवेलेबल होता था और ना ही उन्हें एग्जम्पशंस ग्रांट की गई थी. एंड इन ऑर्डर टू रिमूव दिस डिफिकल्टी, अमेंडमेंट हैज़ बीन मेड इन द subsection 1 of section 197 of the Act to provide that sum on which tax is required to be deducted under the section 194 LB of the Act
shall be eligible for a certificate of deduction at a lower rate, and this amendment will have an effect from 1st April 2023. Section 196 of the Act provides for the deduction of TDS at the rate of 20% in case of the non-resident or a foreign company for the income in the units of mutual fund. अब इन नॉन रेसिडेंट्स को टैक्स ट्रीटी का बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए इट वॉज प्रपोज टू इंसर्ट ए प्रोविजो टू द सबसेक्शन 1 of section 196 of the Act, and this proviso seeks to provide that the TDS would be deducted at the rate which is lower of the rate of 20% and or the rate in provided in the agreement, provided उस recipient को अपना टेस्ट रेसिडेंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ द सेक्शन 90 एंड सबसेक्शन 4 of section 90A of the Act. This amendment will take effect from 1st April 2023. Facilitating the TDS credit for income already disclosed in the return of income. Now section 155 is amended to solve the TDS mismatch problem. When the taxpayer reports his income using the Agrawal method, सपोज उसकी मार्च की कोई इनकम उसे रिसीव तो अप्रैल में होती है और उसका टीडीएस भी अप्रैल में ही कटेगा, लेकिन वो मार्च की इनकम प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में एक्यूरल बेसिस पे ले लेता है एंड दिस क्रिएट्स अ मिसमैच इन द टीडीएस, और वह अपना उसकी इनकम तो टैक्स हो जाती है लेकिन जो टीडीएस उसका अप्रैल मंथ में कटा है उसका उसे क्रेडिट नहीं मिलता। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये प्रोविज़न लाया गया, यह अमेंडमेंट लाई गई कि हम असेसिंग ऑफिसर को वी कैन मेक एन एप्लीकेशन विद इन द पीरियड ऑफ द 2 years फ्रॉम द डेट व्हेन द टैक्स हैज़ बीन withheld, and in this respect an amendment was also made in section 244A to provide the interest on this refund from the date of application till the date of refund granted, और यह amendment 1 अक्टूबर 2023 से लागू किया जाएगा. The most important amendment has been made in regard to the TDS on online gaming. Now section 194B of the Act provides for TDS has to be deducted at the rate in force for winning on the lottery, crossword puzzle or the card games, and under section 194B मेनली हॉर्स रेसिंग से डील करता था, और इन दोनों सेक्शन का टैक्सेशन वाज मेड अंडर द सेक्शन 115 BB. इसमें भी इंडिविजुअल्स ने यहाँ एक लूप होल निकाल लिया था, और वो क्या करते थे कि अपनी विनिंग्स को मल्टीपल ट्रांजैक्शन में डिवाइड कर देते थे और अपनी हर विनिंग को 10,000 की लिमिट से नीचे रखते थे, जिससे उन्हें टीडीएस डिडक्ट ही नहीं करवाते थे. एंड इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस a amendment was made in both these sections, and it was considered that this threshold limit of 10,000 will be considered as an aggregate of the amount during the financial year. Amendment has been made in section 194B of the Act, which to include gaming or betting. An amendment was again made in the section 194B to exclude from its purview the online gaming. और ऑनलाइन गेमिंग को एक नए सेक्शन में सेक्शन 194BA में डाल दिया गया, एंड दिस विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 July 2023 to provide deduction of a tax at source on net winnings in the user account at the end of the financial year. And in this regard, the board will issue some guidelines with respect the previous approval of the central government. A new section 115 BBJ has been inserted with regard to the tax on winning from online gamings.
The net winning from such online games during the previous year, computed in the prescribed manner, will be taxed at the rate of 30%. The amendments which has been proposed in section 194B and 194BB will have effect from 1st April, and the new section 194BA will have it effect from 1st July 2023, and the amendment in the section 115BB and 115BBG will take effect from 1st April 2024. अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और मेरे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे ये बताइए कि आप मेरी अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। जय हिंद। थैंक यू।